complete obeisances to Krishna's dham. So wherever you chant the holy name of Krishna, wherever you serve Krishna, there Krishna and Krishna's dham are non-different. Very clearly it has been said. Wherever devotees are worshipped, there Krishna resides. Then he said, Gaura Amara Jesabasthane Karala Brahmana Rangi. Keep it like this. Karala Brahmana Rangi. Jesabasthana Heribo Ami Pranay Bhakata Sangi. Gaura Amara Jesabasthane. Wherever my Gausundar has gone to visit the holy place, wherever he has visited, Karala Brahmana Rangi. Wherever he has done Brahmana, wherever he has visited, that place even I will also go along with the devotees. I cannot go to any Tirthasthana alone. Even if I try to go alone also, I will never understand the importance. The more we go along with the devotees, then we can have the perfect darshan or perfect understanding of the mood of the deities over that place. Very, very important aspect. Jesabasthana Heribo Ami Pranaya Bhakati Sange. Let us go along with the devotees. If we go along with the devotees, we can appreciate the dham, we can understand the importance of the dham. Every devotee, every deity has a mood. Every deity has a mood in the dham. So the mood of the deity in the dham can be understood only when we go along with the devotees. We may say, I have taken darshan, I have taken darshan. Or darshan, what capacity I have to take darshan? I don't have any capacity. That qualification is given by the spiritual master. Then only one can have darshan of Lord. One can understand the most important aspect is the mood of the deity of the Lord. Mridanga Madhya Shunite Mana Avasara Sada Jache. Gaura Vihita Kirtana Shuni Ananda Hridaya Nache. It is said wherever Kirtan happens, then Mridanga is also played. Mridanga is expansion of Balaram. So Mridanga, Kartal, when you hear this, automatically your feet starts dancing. Your body starts dancing. Avasara Sada Yache. Gaura Vihita Kirtana Suni Ananda Hridaya Jache. So Gaur Sundar is engrossed in the Kirtan. And motivated by Gaur Sundar, all the devotees are also enjoying the Kirtan. The heart dances in the sound of the Kirtan, the sound of the Kartal, the sound of the Mridanga. Very important. Wherever Kirtan is there, then Mridanga and Kartal is played. You don't have to have many more musical instruments. Maximum you can have a flute. You don't have to have some big instruments. These two are enough to have the dancing Kirtan. And Chaitanya Mahaprabhu dances where Kirtan is going on. Yugala Murti dekhiya mora parama ananda hoy. Prasada Sheva karitahaya sakala prapancha jay. Whoever takes everyday Krishna Prasadam, all his prapanchas automatically go away. Prasada Seva. Prasada is the mercy of Krishna. Mercy of Krishna appears in different forms, in the form of association, in the form of learning, in the form of chanting. Even the inspiration to chant is also given by Krishna. Even the inspiration to have association is also given by Krishna. The prasadam of hearing, the prasadam of chanting, Anna prasadam, the prasadam of serving the temple, deity worship, everything is inspired by Krishna and given by Krishna. And it depends on our inclination to have this service, have this mercy, you can say. So because of this mercy, I can see Yugala Murti Dekhiya Mora. I can see these two wonderful personalities, Radha Govind. Parama Ananda Hoy, just by seeing Radha Govindji, there is no limit for the Ananda which is experienced, Parama Ananda.
जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रहित गोलोक भाय चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाए. In whoever's house, every day bhajan happens. Every day there is devotional service which is happening. That's why devotees are supposed to wake up early in the morning. And there is a wonderful day schedule which has been given by Srila Prabhupada. Wake up in the Brahma Muhurta, chant, do the deity worship. Deity worship is also a systematic process. Maybe this Sunday we can have a deity worship, small deity worship class, not an elaborate one, a small deity worship class. Or maybe tomorrow in the class we can discuss a little bit about the deity worship also. Every devotee should do that. And then while doing that, you are singing Samsara Dhavana Leela Loka. You are singing. So this is bhajan. Bhajan means premamai seva, loving service. Wherever this happens is not different from Goloka. It's why wherever sincere worship of Krishna happens, there is a special aura which is created, and that is aura is Goloka Dham. Charana Siddhu, Dekhiya Ganga, Sukha na Seema Paye. Charana Siddhu, Dekhiya Ganga, Sukha na Seema Paye. So when Lord's Charanamrita is taken, it's as good as taking Gangaji. So Lord's Charanamrita and Gangaji are non-different. And just by honoring them, there is no limit for the bliss which is experienced. तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक. Madhava Priya. Nice name, Madhava Priya. Who is Madhava Priya? Tulasi Maharani. On the day of Ekadashi, Tulasi Maharani is worshipped more. Every day a devotee should worship. But Ekadashi is meant for Tulasi Maharani. So just by taking her darshan, all the tapas of this material world, Adhyatmik tapa, Adibhautik tapa, Adidaivik tapa, automatically goes up. And the consciousness, the heart, when you say the heart, that is consciousness. Consciousness is purified. The burning which happens because of this tapas, that's all removed. And Gaur Sundar loves shaka. Shaka means a leafy vegetable. Every day one should offer leafy vegetable to Lord. Chaturmas, yes, it is exempted because in the leafy vegetable you have some special kida at the time. So on the Chaturmas, they don't allow. But every day Gaur Sundar loves shaka. Shaka means leafy vegetables. And by just taking the leafy vegetables which is offered to Chaitanya Mahaprabhu, the devotee's life becomes successful. The last verse. Bhakati Vinoda Krishna Bhajane Anukula Paya Jaha Prati Divase Paramasukhe Svikara Karayata. Bhakati Vinoda Krishna Bhajane. So Bhakti Vinod Thakur has given this wonderful bhajan. Anukula Paya Jaha. In the Anukula Bhava, just accomplish your life. Don't have so many aims and ambitions, nothing. Whatever comes on the way. If we have so many desires, then these desires lead to frustrations. If our life is in a frustrated state, then understand we are not devotees. Simple. Only when we are satisfied. Satisfaction is one of the most important characteristic of a devotee. Jivana, how to have a wonderful life which is accomplished. Satisfaction. In every circumstances, be satisfied. You get something, you don't get something. Be satisfied. Like on this Sunday, we spoke about Purata Alvar, that is Puresha. He was always satisfied. Even if he doesn't get food for 3 days, he is satisfied. His wife asked Ranganatha, please give something. Then Arone Prasadam comes to his house.
Then he said, did you pray something to Lord? He said, yes, I prayed. I cannot see you hungry for 3 days. Then he said, why are you troubling Lord for all these reasons? If it is there in our karma, it will come. It will not there, it will not come. Don't go against the karmas. In the karma, if it is there, it will come. We don't have to have so many ambitions. We just have to follow what our acharyas have said. Just be peaceful, just be calm, just be silent. If you are calm, silent, and satisfied, that is enough. Like Shri Prabhupada went to West. With what hopes did he go? 40 rupees in the hand. Horoscope speaks 108 temples he will make. It happened. But he did not take up so much of anxiety for making temple. Happened. If it is there in the karma, it has to happen. Like many, many years before, I was sent in every temple when like one of the very great astrologers is there. They are sent there. The preachers are sent to know what is the Bhavishya. At that time, nothing was there. In fact, because of some envious people, I was stopped even to come to Mirror Temple. Such things have also happened. At that time, my Shiksha Guru sent me to Bilwara. And he is contemporary to Srila Prabhupada. Prabhupada used to go to him whenever land is to be purchased. Then he told, Beta, tumhara to Raj Gharana ka yog hai. You will have 3 temples, you will have Goshala, you will have Gurukul. At that time, nothing was there. In fact, some envious people, they just put some blames on me. But then afterwards, whoever put blames, anyhow, Lord took care of them in different ways. So if it is there in your bhagya, it is going to come. But I did not hanker for all these things. It is there in the bhagya. Gurukuls are there. Goshala is also there. One temple, already 2 temples are there. In a small way in Boisar, whatever way in Thane, still more temples will come. Kandivali is yet to come. Kalyan is yet to come. It will happen. Our work is just to do what our Shiksha Guru, Diksha Guru says. If we have some different motives, different aspirations, then understand, we will never be satisfied. Different motives, different aspirations will not allow us to be in the same line of thought. That is what in Chaitanya Bhagavat also very clearly it has been given. Mukunda was not given the darshan, not given the mercy, just because he used to have a different line of thought. Sometimes acted as a devotee, sometimes in a different way. So, Bhakti Vinoda has given this wonderful song. And this wonderful song will increase our bhakti. And this is sung on the day of Ekadashi. So this song will be put in the group. Those who are newly joined should learn this song, Shuddha Bhakata Charana Renu, and try to sing this song at home. Very important song which should be sung at home. Prati Divase Parama Sukhe Svikara Karayata. Every day you will experience a special bliss. There will be only a vritti. So for another 10 minutes, we'll continue for Chaitanya Bhagavat, some of the verses. So I will just split the group. Venkatesh Avatar Prabhu for 10 minutes. Just take the further verses. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Shri Prabhupada ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Panchatattva ki jai. Chaitanya Bhagavat, Madhya Khanda, text number 199. Prabhu bale arya yadi koti janma haya, tabe mora darshana, paibe nishya. The Lord said, after millions of birth, he will be certainly get my darshana. After millions of births, he will certainly get my darshana. So in answer, the Lord said, after millions of birth, Mukunda will be fortunate enough to get my darshana. 200. Shunile nischaya prapti prabhura shrimukhe Mukunda sinchita haila parmananda sukhe.
पायबे पैबे बलि करे महानित्य प्रेमे विहला हैला चैतन्य भृत्य. So as soon as the Mahaprabhu, as soon as the Mukunda heard from the Lord that he will certainly attain him, he became immersed in spiritual happiness. He began to enthusiastically dance while explaining, explaining, I will be attained him, I will be attained him. In this way, the Lord Chaitanya servant become overwhelmed in ecstasy. इस तरह से जब मुकुंदा देव को उनको मालूम पड़ा कि भगवान की मेरे को प्राप्ति होने वाली है और इससे वो खुश हो गए. So on hearing from the Lords, he will be attend the devotional service that the Lord's darshana after millions of lifetimes. Mukunda began jubilant since according to the consideration of the Lord's devotee, the Mayavadi commit spiritual suicide and are never eligible to attend the devotional service to the Lord. So Mukunda was most jubilant to know that he was not subject to such situations. So devotional service, which is the eternal functions of the living entity, he vanquished forever one who attains the results of cultivating Brahmana realization. So it is stated in the Brahmananda Purana, Siddhi Brahma Sukhe Magna Daityascha Harina Hata. So the Siddhis resides there, absorbed in the bliss of Brahmana. Demons killed by the lords also attend the realm and respecting the Mahaprasad. So on Brahmanas, the offering of to Shri Hari, the transcendental, incorruptible and non-different from the Vishnu, those with the perverted mentality who think them to be materially will develop the leprosy, will be devoid of children, of life and family, and will go to the deepest, darkest regions of hell. From this will be never return. So one who, so yo vekta nayana rahitam anayena snoti yahatav ubhavyu narakam ghoram vrajate kalama akshayam. So one who assumes the dress and position of the acharya, who speaks against the conclusion of Srimad Bhagavatam and the other scripture, and who performs a kirtana opposed to the proper glorification of Sri Krishna, certainly goes to hell for countless lifetime along with his disciples and whoever else hears such non-devotional talks and kirtana. So since this conclusion of such verses manifested in the waves of Mukunda's thought, and his result feeling of hopelessness arose in him. So Mukunda became extremely happy when delivered from the condition by the assuming words. So after millions of birth, he will be attend the devotional service. He remembered the unlimited mercy of Sri Chaitanya, become the overwhelmed with the love of God, and began to dance enthusiastically. So one day he will be attend the Lord Darshana. This was cause of Mukunda's jubilation. तो ये पढ़ने के बाद एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है भगवत गीता में, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता. सो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि हमें डिवोशनल सर्विस अगर प्राप्त करना है, भगवान की सेवा को हमें स्वीकार करना है, तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, भय छोड़ना पड़ेगा और क्रोध को छोड़ना पड़ेगा. तो अर्जुन को बता रहे भगवान यहाँ पे, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता. भगवान बता रहे कि अर्जुना आसक्ति छोड़ दो, भय छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, ये सबसे तुम अगर मुक्त होगे तो मुझे आप प्राप्त कर सकोगे और मेरी शरण में आकर मेरी शरण में आ जाओ. इस तरह से भगवान कहते हैं. तो ये डिवोशनल सर्विस हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें आसक्ति से छुड़ाना पड़ेगा. अटैचमेंट जो है उससे हमें निकलना पड़ेगा. जितना हम अटैचमेंट करेंगे भौतिक जगत में, उतना हम जो है डिवोशनल सर्विस से दूर रहेंगे, हम डिवोशनल सर्विस के पास नहीं जा पाएंगे. तो आसक्ति छोड़ना है, भय को छोड़ देना है, भय नहीं रखना है, भय को निकाल देना है. और क्रोध, भय के साथ भी क्रोध भी निकल जाएगा. तो इस तरह से भगवान बता रहे स्वयं आगे 202, महानंदे मुकुंदा निश्चय से खने देखी बना है ना वाक्य सुनिया सर्वणे. So on hearing the statement, he will be see me.
मुकुंदा began to dance, so there is a great happiness. इस तरह से उनको बहुत खुशी हो गई कि मेरे को जो है भगवान मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु तो सामने ही है, बट उनको कृष्ण की प्राप्ति के लिए बता रहे। मुकुंदा देखिया प्रभु है से विश्वंभरा, अजिना हैला मुकुंदरे हना सत्वरा। So on seeing the Mukunda's Lord Vishwambhara smiled and ordered, bring Mukunda's at once. एक बार मुकुंद को मेरे सामने लेके आओ। सकला वैष्णवा डाके ऐसा मुकुंदा, ना जाने मुकुंदा किचु पये आनंदा। So all the Vaishnavas called, come Mukunda. But Mukunda was so happy that he did not know what was happening. तो मुकुंदा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनका आनंद इस तरह से प्रफुल्लित हो रहा था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। प्रभु बले मुकुंदा गुचिला अपराधा, ऐसे आमरा देखा धरना धरना प्रसादा। The Lord said, "Oh Mukunda, you are free from all your offenses." मुकुंदा तुम फ्री हो चुके हो, तुमने जो भी तुम्हारे से गलती होगी उनसे सब तुमको फ्री कर दिया मैंने। कम टू सी मी एंड टेक माई मर्सी। तो इस तरह से भगवान की कृपा बहुत समय के बाद मिलती है, तो हमें भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए। कृपा का, जैसे यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधने जाती है तो हर समय 2 उंगलियां कम पड़ती है। तो 2 उंगलियों का अर्थ क्या है कि पहला उंगली का अर्थ है कि हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। जितना हम प्रयत्न करेंगे, साधना करेंगे, अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे, साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिवोशनल सर्विस की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके जो है भगवान बंदे जाएंगे। और दूसरी गार्ड का अर्थ है भगवान की कृपा, मर्सी। तो इस तरह से ये कृपा मिलती है। तो यशोदा मैया ने सुबह से लेकर शाम तक, यशोदा मैया तो बहुत ग्रेट डिवोटी है, उनको तो मिलना ही मिलना है मर्सी। तो इस तरह से भगवान को दिखाने गया और फिर भगवान बंदे गए। तो इसी तरह से जितनी हम साधना हमारी साधना अच्छी करेंगे, साधना साधना अगर अच्छी है तो साध्य को हम प्राप्त कर सकते। साध्य मीन्स गोल। तो हमारा गोल क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति ने भगवान के प्रेम की प्राप्ति, राधा रानी के प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति को प्राप्त करना है। और इस तरह से साधना ही हमें साध्य तक ले जा सकती है। इसीलिए सुबह का चैंटिंग, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, नए लोग हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से साधना करना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन, आज एकादशी है तो चैंटिंग करना, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 25 राउंड करना चाहिए। हो सके तो 64 राउंड मैक्सिमम, मिनिमम 25, मैक्सिमम 64 राउंड। तो इस तरह से साधना करेंगे तो साधना से ही जो हमें फल मिलेगा। प्रभुरा आजनिया सबे अनिला, धारिया पडिला मुकुंदा महापुरुष देखिया। So by the order of the Lord, all the devotees brought Mukunda, who fell to the ground and seeing the Lord. इस तरह से वो भगवान को देखने लगे। प्रभु बले उठा उठा मुकुंदा आमरा, तिला तिला देखा अपराधा, अपराधा नहीं के तुम्हारा। So Lord said, get up my dear Mukunda, you do not have even a fraction of offense. इस तरह से हमारे जो अपराध है उस अपराध को भगवान जब क्षमा कर देंगे, तो कौन करेंगे क्षमा? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, यही करेंगे, कृष्ण तो नहीं कर पाएंगे। तो ये इनकी भक्तों की कृपा होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त बन के आए, स्वयं भगवान है, भक्त बन के आए और इस तरह से मर्सी बांट रहे सबको। तो इस तरह से हमें भगवान की अगर मर्सी मिल जाएगी, हाँ, और वो हमारे ऑफेंसेस, जो हमारे अपराध है, उसको क्षमा कर देंगे। क्योंकि हमने इस जन्म में भी अपराध किए हैं, कर भी रहे हैं। इसके अलावा हमने पिछले जन्म में बहुत सारे अपराध किए हैं, हमें पता नहीं है। पिछले जन्म के बारे में हमें पता नहीं कितने अपराध किए हमने, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अपराध किए। जैसे मैंने एक बार बताया था, एक महाप्रभु से सुना था, एक प्रभु जी से, समुद्र में कितना पानी रहता है, समुद्र में कितना पानी, सी वाटर, इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है। तो उतने पाप, उतने विशाल क्वांटिटी में पाप हमारे हृदय के अंदर बैठे। तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये पापों को मैं कैसे नष्ट करूंगा। ये विशाल हृदय
में ये विशाल सागर जैसे पाप हमारे हृदय में बैठे, तो वो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे करेंगे करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो समाप्त होगा। तो समाप्त हो, कितना समाप्त होगा? थोड़ा होगा, थोड़ा होगा, थोड़ा होगा। लेकिन समुद्र जितना पानी तो निकलना तो कठिन है, कठिन है। तो हमारे पाप भक्ति से निकलेंगे, चैंटिंग से निकलेंगे, लेकिन फिर भी इतने नहीं निकल पाएंगे जितनी कि कृपा होगी तो निकल पाएंगे। तो हमें कृपा का इंतजार करना पड़ेगा। हम सोचेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे तो भी हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे, क्यों नहीं कट रहे? कटेंगे, कटेंगे, धीरे धीरे कटेंगे। भक्ति इज अ स्लो प्रोसेस, तो वो कटेंगे, धीरे धीरे कटेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो उसके लिए कृपा चाहिए, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा। तो इस तरह से कृपा होगी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट वर्स लेंगे। संग दोषा तुम्हारा सखला हैला, हैला कैसे तोरा स्थाने आमरा हैला प्रजाए, द फॉल्ट ऑफ योर बैड एसोसिएशन और वैनक्विश। देखिए, आई हैव बीन डिफीटेड बाय यू। सो तुम्हारे जो गलत एसोसिएशन था अभी वो सब खत्म हो गया। सो मैंने अभी आपको फ्री कर दिया। तो इस तरह से जब अभी मैंने बताया समुद्र जैसे पाप नष्ट करेंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। यहाँ पे वही संदर्भ बताया गया, भगवान की कृपा से ही होगा। हम चैंटिंग करेंगे, हम सोचेंगे हमारे पाप नष्ट हो रहे, नष्ट। भगवत गीता में भी कहा है कि चैंटिंग करने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध हमको हम नष्ट कर सकते हैं। फिर भी जो है कृपा, कृपा के बगैर हम वो नहीं कर सकते। भगवान की कृपा चाहिए, डिवोटी की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए। और वो कृपा से ही जो है हम हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, हमारे बुरे कर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं। और इस तरह से कर्म का ये जो हृदय के अंदर बैठा हुआ गठड़ी हम जो लेके आए, कर्म की गठड़ी, और उस गठड़ी को हम जब खाली करेंगे, वो उस पोटली को हम खाली कर देंगे और पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएगा, तब जाके हमें शुद्ध भक्ति मिल पाएगी। और वो शुद्ध भक्ति के लिए हमें प्रयास करता रहना चाहिए। सो द सुप्रीम लॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय लव। देखिए, भगवान भगवान जो है भूखे है। कैसे भूखे है? प्रेम के भूखे है भगवान। भगवान भूखे है तो प्रेम के भूखे है। A devotee is able to control the Lord and with the love in such a way that he always capable of even changing the Lord's feeling. देखिए, तो प्रेम पूर्वक हमें चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग करना है तो हमें प्रेम पूर्वक करना चाहिए, शांति से, समाधान से। एक जगह पे बैठ के अच्छी तरह से 1.5-2 घंटे का चैंटिंग हम अच्छी तरह से करेंगे, बिना कोई डिस्टरबेंस का। किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो उस तरह से हम अच्छी तरह से एक जगह पे बैठ के शांति से हम चैंटिंग करेंगे। विचार आएंगे, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन 1-1.5 घंटा हमें निकालना है भगवान के लिए। प्रेम, प्रेम से हम चैंटिंग करेंगे। हाँ, और उसी में जो है 99% हमें डिवोशनल सर्विस मिलेगी, भक्ति मिलेगी। सो बाकी सब कुछ तो 1% है, वो भगवान की कृपा के ऊपर है, निर्भर है। बट सभी वैष्णवों ने कहा है, भगवत गीता में, भागवतम में क्या है, 99% जो है हमारी भक्ति चैंटिंग के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए एकादशी के दिन, कार्तिक जैसे मंथ में, अधिक मास जैसे मंथ में हमें चैंटिंग अच्छा करना चाहिए, और इस तरह से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। सो माय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हैज बीन डिफीटेड बाय योर लविंग सर्विस। देखिए, तो हम जितना प्रेम करेंगे, उस प्रेम से जो है भगवान हमें शक्ति देंगे। Forgetting your position as an external servant of the Lord, you forgot your constitutional duties as a result of the bad association you had that time. तो हमारे कर्म जो है बुरे एसोसिएशन को खत्म कर देते हैं। So therefore you were affected by the bad association. So by the influence of the Lord's eternal devotees, association of a temporary taste for non-devotional path has been converted into a eternal taste. इस तरह से देखिए, भगवान की कृपा से ही वो परिवर्तन होगा। उन्होंने सब परिवर्तन कर दिया मुकुंद का। Therefore, aversion of the Lord cannot be present in you. I gave you the benediction that you will be achieve the devotional service to the Lord by according to the degree of your offenses. And I ascertained that your reinstatement is devotional service will be millions of births. So due to their intense eagerness of devotional service, you have surpassed the time determined by me in a moment. So my potency has been defeated by your potency. तो इस तरह से भगवान की कृपा होगी। तो हम यहीं पे विराम करेंगे। श्लोक नंबर 209 कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। ठीक है, किसी का कुछ हरे प्रश्न है? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे कृष्णा दंडवत वैष्णव। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो क्लोज करते हैं।